अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी क्वेश्चन रह गया था क्लास में। हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम इसे दोबारा इन क्लास करें, मगर क्योंकि ये पिछले क्लास से पिछले सेमेस्टर से रेलेवेंट है, इसमें बोला इसकी ऑनलाइन वीडियो ही बना लूँ ताकि इससे आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक 10 फुट लॉन्ग बीम है, मतलब स्लैब है, एसेंशियली वन वे स्लैब जो सिंपली सपोर्टेड है। लाइव लोड 200 पाउंड स्क्वायर फीट, एफ सी 4000 psi एंड एफ वाई जो है वो आपका 60 KSI ग्रेड 60 स्टील या 60,000 psi है। इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है। हम लिख लेते कि जो भी इधर था, तो एसेंशियली हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है जो कि मैं इधर बना लेता हूँ। ठीक है। ये आपका 10 फीट लॉन्ग हो गया है और ये ऑब्वियसली एक वन वे स्लैब है जो इधर से सपोर्टेड हुआ है एसेंशियली। हम इसका एक स्ट्रिप लेते हैं और उसी पे कैलकुलेशंस करते हैं जो मैं क्लास में रिपीट कर लिया था। ये स्लिप होती है 1 फीट लॉन्ग या 12 इंचेस। इससे फिर एक कन्वीनियंट सही हो जाती है कि आपके पास कोई भी अगर पी एस एफ की वैल्यू हो स्क्वायर फीट, तो वो स्ट्रेट अवे एप्लीकेबल होती है एज पाउंड पर फीट, क्योंकि द विड्थ इज ओनली 1 फीट, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिर से हम इधर एक बीम बना लेते हैं। ठीक है। थोड़ा बेहतर बना इसको। ठीक है। और अभी तक हमें बस पता है कि ये जो है कर्वेंट इज ये 1 फीट है। और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम जो पावर पॉइंट के अंदर रिकमेंडेशंस लिखी हैं उसमें जाते हैं। स्टेप्स क्या हैं? ये है कि स्टार्ट विद मिनिमम थिकनेस एज पर ACI recommendations. ACI recommendations में table 7.3.1.1 states कि the minimum thickness of solid non pre-stressed one-way slabs you have simply supported for the height should be at least a lower 20. ठीक है। applicable for number with concrete and grade 60 steel only. ठीक है। तो हमारे पास grade 60 steel है, तो this is convenient, so ठीक है। तो 7.3.1.1 के हिसाब से H minimum should be L over 20, which is 10 feet over 20, which is half a feet or 6 inches. तो assume हम इसको ले लेते हैं। हम इससे बड़ा ले सकते हैं। Obviously, we cannot take anything smaller than this. So assume X is this H is equal to 6 inches. ठीक है। Step 1 done. Step 2, decide on primary rebar, adjust for cover. अब when I say decide on primary rebar, I don't mean कि आप immediately किसी किस्म का rebar select करोगे। अभी मैंने नंबर 4 डालना है, नंबर 6 डालना है, नंबर 8 डालना है। What I mean is कि we have to adjust for cover. When we adjust for cover for a slab that is not exposed, हमारे लिए it is not specified whether it is exposed, so you can take this value. ठीक है। तो इसमें you have two options, either for smaller bars or for the larger number 14, number 18 bar. हमारे पास almost definitely smaller bar will be okay. Um, and that's because if you take too big of a bar, then either you're introducing a compression failure, जो हमने discuss किया था, same for slab में भी होएगा as per the beam, or the spacing के हर बार की spacing from one another will be so far away that it actually violates another maximum spacing guideline of ACI, जो हम बाद में इसमें देखेंगे। ठीक है। तो I'm pretty sure it is going to be smaller than number 11. The specified cover is 3/4 of an inch. That's for your measurement में इस टेबल का नाम देखना भूलिए। 20.5.1.3.1. Alright, so 20.5.1.3.1 states that cover has to be greater than or equal to 3/4 of an inch. तो
हमारे पास 6 इंच की हाइट है, इसमें से माइनस करेंगे 3/4, so you will have 5 and 1/4, which is a bit awkward. So assume let's take cover of 1 inch. Okay, so then you will have a value of d of h minus 1, 6 minus 1, which will be 5 inches. So at this stage we have progressed कि हमारी जो total height है, या thickness है slab की 6 है, and if we make positions for slab, then our value of d depth, यानी कि from the top to the center of the rebar at the bottom will be 5 inches. तो अभी तक हम इधर सुकून से पहुंच गए हैं, ठीक है. Alright. Okay, what's next? Ensure जो भी आपकी selected steel है, it follows the specified steel requirements of minimum slash at least this much or maximum. Maximum तो हमारे पास probably we don't need to worry about that, मगर at least minimum तो हमें निकालनी होगी. तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमें इसके लिए रो मिनिमम के लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. इसके लिए हमें आर एन चाहिए. आर एन जो है वो दिस इज दिस. इसमें मैंने एक फी डालना भूल गया हूँ. एम यू और फी बी टी स्क्वायर होता है, तो ये गलत है वैल्यू, इसको मैं सही कर लूँगा बाद में. बट एनीवेज बल्कि मैं इसको मैं अभी ही सही कर देता हूँ. लेट्स सी ऑप्शंस मैं देता हूँ, and I'm going to add a fee to this. All right. Let's see. Back here. So we need for row minimum, we need Rn. For Rn, we need Mu. Mu क्या होता है? For a supported slab, W square over 8. फिर आपको याद हो, इसके लिए we need W. W क्या होगा? हमारे पास डेड लोड और लाइव लोड होगा obviously. तो what is it usually? 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड. ठीक है. तो हमारा लाइव लोड तो गिवन है कि लाइव लोड वाज 200 psf because this is only a 1 foot wide beam strip, I guess. This is हम डायरेक्टली इसको इनपुट कर सकते हैं. The other one, what we have to do is basically we just have to multiply that value with the thickness. The thickness was 6 inches और डेंसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है? 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट. इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 6 इंचेस से. क्यूबिक फीट है यानी 150 times 6 equal 12 to convert it, and this will become 75. therefore हमारा डेड लोड जो होगा वो हो जाएगा 75 pound square feet. ओके. तो अब इधर जाके what we'll do is that we'll start plugging them in. 1.2 dead load of 75 plus 1.6 live load of 200. इसकी वैल्यू क्या है? We can calculate immediately. 1.2 times 75 plus 1.6 times 200, and our value is 410 pound square feet. Pound per feet भी कर सकते हैं for 1 feet of the beam. We'll keep it as PSF, just to highlight that this we're working on a slab, not a typical beam. ठीक है, तो बस ये आ गया. तो अब इससे हम निकाल सकते हैं mu, which is equal to WL square over 8. 410 pound square feet कितना है? 10 square over 8. इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. So you'll have 410 times 10 times 10 again divided by 8, and the value is 5.25. तो हम लिख लेते हैं इधर as 5.25. इसकी क्या होगा? It was pound and feet, right? So this will become pound feet. So now that we have that, we can move on.
And now we can finally get to business. We can get our RN. And what the RE, what the RN, what the RN. N is equal to mu over PT square. Mu is 5125 pound feet. You want to convert this into inches, so we'll multiply it by 12. Okay. Phi is 0.9 cubes because we want to ensure it's a tension controlled area. ठीक है, हम उससे कम नहीं रखते typically. तो sensitivity factor हम उसका maximum 0.9 ही रखेंगे. बाद में for verification we can go through the checks and validate कि हमने सही किया था या नहीं. 12 inches होगा हमारा B की वैल्यू और D की वैल्यू है 5 squared. Let's try to calculate this and we'll have 5125 um, times 12 divided by bracket के अंदर because all of these are dividing 0.9 times 12 times 5 times 5. We close it and we get 227.778. Let's round it off and this will be my PSI because either pounds or pound for pound now, but when we converted it, we converted from feet to inches, so now it's PS, pounds per square inch. I hope that the clear here. Now finally, we plug it into this long equation, 0.85 f of c or f of y, bracket 1 minus the bottom bracket 1 minus 2 over r n, and I think it's 0.85 fc, double check kar leta hoon. And then we close. Um, okay, let's double check. 1 minus 1 minus 2 Rn, 1 minus 1 minus FC, 1 minus here. We were already given that FC is 4,000 PSI and that FY is 60,000 PSI. So we can just plug these in. And let's do that. This will be pretty long. 0.85 times 4,000 and by 60,000 times पहला ब्रैकेट खुलेगा 1 minus और ब्रैकेट खुलेगा 1 minus और ब्रैकेट खुलेगा 2 times RN is 227.8. मैं 78 लिया था तो let's keep it to 78. ठीक है, divided by 0.85 times 4,000. ठीक है, ये पहला वाला हो गया. इसको बंद करना है. ये स्क्वायर रूट है तो विंडोज 0.5 and then finally we close the big one and now our value is 0.0033. ठीक है, so we'll go ahead and say 0.00393. Sure. Now we know that rho is equal to AS over BD. So हम BD उधर ले जाते हैं and you can say that the minimum steel reinforcement we would need would be rho minimum times the width times the depth. हमने निकाल लिया 0.00393 times width will be 12 times depth is 5. And what does that give us? 0.00393. I hope it's a minus. All this extra zeros on the yeah, 0.00393 here. And this is giving us 0.2358. This is 0.2358, say 236 inch square. So we need 0.236 inch square reinforcement per feet of. So, ठीक है, sure. अब इसका फुलफिल करने के लिए हम टिपिकली एक टेबल पे जाते हैं. इधर टेबल्स खुले हुए हैं. ये टेबल्स आप फेमिलियर होंगे QC1 में काफ़ी यूज़ हुए हैं. And let's start from the top. Okay, 0.23 या 0.236 जो भी is a very small value.
एंड राइट इनफ वी कैन सी स्ट्रेट अवे के जो है सबसे छोटा नंबर 2 बार नंबर 4 बार के 2 बार भी 0.39 है विच इज़ अ लॉट मोर देन नीडेड। ठीक है, तो फिर क्या करें? अच्छा, लेट्स सी हाउ मच वन नंबर 4 बार इज। वन नंबर 4 बार इज 0.2 इंच स्क्वायर, राइट? 2 0 0.4 हो जाएगा। I mean close to that, तो यानी हमारा आंसर इज समवेयर बिटवीन 1 and 2, राइट? आप टिपिकल बीन जो होती है उसमें तो ऑब्वियसली आप 1 पॉइंट कुछ तो नहीं बोल सकते, आपको 2 बार पिक करने हैं, एक करना है। मगर इसमें अगर पर फीट की हम ले रही है स्लैब, हम स्पेसिंग में तो चेंज कर सकते हैं। तो एक और टेबल होता है जब हम स्टार्ट करेंगे यूज़ करना, A6 एरियाज ऑफ बार स्लैब। इसमें क्या होता है कि स्पेसिंग के हिसाब से और बार नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है? तो obviously ज़्यादा स्पेसिंग होगी देन द स्मॉलर द टोटल एरिया। तो हमारा 236 है यानी 0.24 रीच कर रहा है, इधर 0.24 है। बार नंबर 3 एट अ स्पेसिंग ऑफ 5.5 इंचेस। फिर इधर है नंबर 4 बार एट अ स्पेसिंग ऑफ 10 इंचेस। आई थिंक कोई भी बंदा हो एज अ कॉन्ट्रैक्टर, थिंक ऑफ इट इकोनॉमिकली, जितना कम दायरा उतना हमारे लिए बेहतर है, राइट? तो वरना कॉस्ट्स बढ़ती हैं। तो आई थिंक 4 बार नंबर 4 एट a spacing of 10 is suitable, so I will pick that one. So we will use number 4 bar at 10 inch spacing, ठीक है? और हमारा ए एस फिर हो जाएगा 0.24 इंच स्क्वायर पर फीट ऑफ द, ठीक है? ये हो गया। और नेक्स्ट, सो वी हैव नंबर 4 10 इंच स्पेसिंग। अब हम बेसिकली सारे जो चेक्स होते हैं वो हमें वन बाय वन देखने होंगे। तो अब लेट्स सी कि हमारी जो स्लाइड्स हैं उसमें क्या इंश्योर टेंशन फेलियर पहले चेक है। आप एट दिस स्टेज यू डोंट रियली नीड टू, क्योंकि इतनी कम है कि डेफिनेटली टेंशन फेलियर ही होगा, बट वी कैन गो फॉर इट, इट्स नॉट अ बिग डील। हमारे पास अभी ऐसे किस्म का सीन है कि यू हैव width is 12 inches, the depth is 5 inches and AS is 0.4, ठीक है? तो हम वैलिडेट कैसे करते थे? वी से कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। कंप्रेशन क्या होता था? 0.85 एफ ऑफ सी ए बी एंड टेंशन में ए एस एफ वाई। इससे हम निकालते थे ए की वैल्यू। उस डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि इट हैज़ बीन डन a lot of times in PRC1। इसमें हम वैल्यूज फीड इन अगर करें तो लेट्स सी ए एस हमारी क्या है 0.24, एफ आई क्या है 60,000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट खोलता हूँ 0.85 times 4,000 and times the width is inches, keeping it in inches, and here 0.353, let's say 0.353 inches, ठीक है? अब हम इसे कन्वर्ट करना है and we know that the C is in beta 1। beta 1 क्या होता है? In case you don't remember, 0.85। let's see if I have it on this slide। yep, हमारा 4,000 है, 4,000 से ज़्यादा नहीं है, तो we will take beta 1 as 0.85। तो इवेंचुअली हम इधर आएंगे और फिर इधर आके अगर हमें C निकालना हो तो is this accurate? I think I flipped it around। I think it's C equals, it's A equals beta 1 C। तो ये मैंने गलत किया हुआ है थोड़ा, मैं इसको सही कर लेता हूँ। C and then C will be equal to A over beta 1, which is 0.353 over 0.85, and that will be C 0.353 over 0.85
Zero, 0.45415. All right. Okay. Obviously ये बहुत ही छोटी वैल्यू है कंपैरिजन उसकी. I'm fairly sure this will be a tension failure, but let's go all the way. अच्छा, हमें क्या करना होता था, हमें देखना होता था कि हमारी वैल्यू क्या आएगी, which used to be d minus c over c times 003. Let's plug it in. D की वैल्यू है 5 minus 0.412 divided by 0.412, right? And times 0.003. Then you have 0.0 कितना था, 0.0334, which is much higher than the 0.00, I think 0.035, 0.005 से करीबन करीब ऐसा कुछ होगा, तो ज़्यादा था. So therefore tension controlled failure. ठीक है. अच्छा, what else? Check spacing. अच्छा, अब इधर लिखा हुआ है कि this it should not exceed s. This is a different, and if the maximum spacing shall be the lesser of 5h and 18 inches. ठीक है. Our height is 6, so 5 times 6 is 30 or 18. The lesser of 30 and 18 is 18. यानी जो हमारी spacing है, it should be less than 18 spacing. हमारी spacing is number 4 at 10 inch, just less than 18 inch maximum spacing. तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है. ठीक है. So at this stage we're done, right? But almost can like शेयर भी हमें ट्राई करना होगा, मगर if you remember, when it is a slab, not only do you have the ones you decided जो ये होंगी, ये वाली हमारी number 4 है at 10, but you also need transverse reinforcement. You need the reinforcement perpendicular to the main में. ठीक है. तो नंबर 4 at 10 अगर हमारी जो है इस साइड पर है, तो वाले जो है perpendicular होंगे. उसका भी एक क्लॉज है ACI में, वो इधर लिखा हुआ है on the slide. A minimum area of ASMN of 0.0018 area gross shall be provided. AG is area gross. ठीक है. तो मतलब वापस आ जाते हैं, and then इधर से we have to go 0.0018 of area gross. एरिया ग्रॉस क्या होता है? एरिया ग्रॉस एसेंशियली जब भी हमारे पास कोई स्लैब होती है, तो जो भी रीबार्स होते हैं, हम वैसे तो सब बोलते हैं कि हाँ you take your width and you take your height, but not exactly. If you remember, जो भी रीबार के नीचे होता है, that's only cover. So we will take it as D, which is 5 inches. Yeah, inches आ जाएगा. So now our value is 0.0018 times 12 times 12. अब हम इसे कैलकुलेट करें. We have 0.108 inches required inch square per feet of slab. And this is transverse, right? मतलब ये जो होगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा, perpendicular to our longitudinal reinforcement. अब उसके लिए हम कौन सी स्पेसिंग देखें? उसके लिए जो हम स्पेसिंग देखेंगे, let's say इसके में जाएंगे probably somewhere around here. I think this one is okay. 1 is too close. So number 3 at a spacing of every 10 inches, and number 3 rebar is valid. मैं आ जाऊंगा, अब बोलूंगा for transverse reinforcement
use number 3 at 10 inch spacing. ठीक है, अभी लेक्चर कंप्लीट हुआ है. So now what do you have to do? We have to design for shear. शेयर में यूजुअली हम क्या करते थे कि डिपेंडिंग ऑन लेट्स से हमारी ये बीम है, इट्स सिंपली सपोर्टेड एंड यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन इट. जो हमने निकाल लिया था, आई थिंक इट वाज 410 psf. लेट मी डबल चेक. yep, 410 psf. तो एज वी रिमेंबर, जो हमारी shear force डायग्राम होती थी वो हमारी जाती थी फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन स्ट्रेट लाइन. और shear force डायग्राम हो गई, और फिर हमारी bending moment डायग्राम यूज्ड टू बी अ कर्व with the maximum at, इसको तो बोला है around 10%, and this should be your bending moment. Yeah, ठीक है. तो just like our maximum moment used to be W square over 8 R, so what will be WL over, right? So now we have a W which is 410, length is 10 feet, and it should be divided by 2, which we calculate on the waveform 10 times 2, 2050, and this would be just a force, not for feet, so it would be directly 2050 pounds. Okay. Sure. So how do you address it? So we have when you have any nominal Vn, which would be with the strength reduction factor, which is under steel reinforcement, is being carried by steel, and the rest is carried by concrete. Okay. If we go back to our design slides, shear में, here you have it. This is a formula. जो VC होता है वो होता है 2 lambda under root FC D, और स्टील होता है उसकी स्पेसिंग हम निकालते थे using this formula and so on. Magar, there's this clause that is very interesting and usually true for slabs, which is that for pre-stress beams, typically pre-stress और non-pre-stress के लिए भी applicable है, कि you have where VU is greater than half of the phi VC. यानी कि अगर concrete जो है, it is able to carry more than twice the shear amount being imposed upon it, then we do not need any reinforcement. इसके हमने equations की थी. तो in this case, let's see, VC is 2 lambda root of FC BWT. So we come to lambda क्या होगा? Let's just see what lambda is. I think we can just take it as 1. I can't remember. ठीक है. So we'll take it as 1 for now. FC is 4000. PW is 10, and then the depth is 5. And when you calculate all this, you get 2 times 4000 square rooted times 12 times 5. And that is giving you 7589. I think it's my number 0.75. Don't know again for some दिखा रहा था. Yeah, lambda 100.75 डालना है. I think जो 5 होता है वो दूसरे उसके लिए होता है. And this will give you not this value but instead 5692. Now what is view? View is this, मगर इसको हमें strength reduction factor के साथ
फी के साथ डिवाइड करना है. फी इज इक्वल टू 0.75 for all things related to share. So 50 divided by 0.75 will give you 2733. अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करें 2733 times 2, 2 of u over fee will give you 5466, which is less than half of VC, which is 5692. In other words, the concrete itself has, it can carry more than twice the shear on it, regardless of any steel focus. Therefore, uh, stirrups required. Keep in mind this में हमने एक shortcut भी किया है. Typically आप exactly जो है कोने वाला VC नहीं लेते, but you take it at a distance D. Now the point being कि if it can handle this weight, it can definitely handle it at a distance D behind it. ठीक है. So no stirrups required. So now, finally, it's clear to go, and therefore you have chosen our standard be 6-inch thick slab number 4 at an inch spacing, which is longitudinal, basically along the direction, rather perpendicular direction of the supports. And number 3 at 10-inch spacing, जो कि हो जाएगा हमारा transverse reinforcement, and both have been checked. ठीक है. Thank you.